Hello friends, welcome to EduTap and a warm welcome to you all to the series that we have started very recently for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, as part of which we'll be doing daily 15 MCQs, and today we'll be doing 15 MCQs, the most important 15 MCQs on Minimum Wages Act 1948, and this would be part 1 of this act, wherein because we'll be doing another 15 questions in the next part. So here comes the first question. So before that, small introduction. See, the roots of the minimum wage laws, you can trace them back to labor movements in various countries during the early 19th or the late 19th century and the early 20th century. Because since these times, the labor movements have started, based on which only various countries they have come up with various laws associated with the wages. Okay, so the first question is, which among the following countries was one of the first countries to introduce a minimum wage law in 1894? कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया है कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए एक्चुअली? ओके, एंड यहाँ पे आता है हमारा न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड वो कंट्री है जो सबसे पहले वर्ल्ड में एक मिनिमम वेज लॉ जैसा एक लाया था in 1894. Now moving on to our question number 2. The Harvester Judgment, also known as Ex parte H.V. Mackay, was landmark labor law case that established the basis for one of the following countries' minimum wage for unskilled workers. Now ये जजमेंट हुआ था 1907 में. उस टाइम के जजेस थे जस्टिस थे हेनरी बॉन्स, एंड उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर न्यूजीलैंड के बाद अगर किसी कंट्री का लेबर लॉ कुछ आया है रिलेटेड टू द मिनिमम वेजेस एंड अनस्किल्ड लेबर्स के लिए, दैट वाज ऑफ दिस कंट्री, एंड ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. ना ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके यूनाइटेड किंगडम ने भी एक लॉ लेके आए थे, ट्रेड एक्ट करके, उन्होंने भी रिलेटेड टू वेजेस एक लॉ लेके आए थे. उसके बाद आया था यूएस की बारी. ना यूएस में क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम वेज लॉस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज द यूएसए. ना इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डेविस Bacon Act of 1931 established a nationwide minimum wage for construction workers on federal projects, that is जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है उस पे जो भी वर्कर्स काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके लिए एक मिनिमम वेज होना चाहिए करके एक एक्ट ले आए थे. ओके, द फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट FLSA 1938 set a minimum wage and established the 40-hour work week. उसके बाद 1938 में एक और लॉ आया था, द फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स, FLSA बोलते हैं उसको, एंड एज पर देम दे हैव सेट ए मिनिमम वेज, एंड बोला कि हफ्ते में 40 आवर्स का ही वीक मतलब वर्क वीक होना चाहिए. थर्ड, ये सारे स्टेटमेंट्स है. नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट है, फार्म बोर्ड्स एक्ट 1945 एस्टैब्लिश्ड ए नेशन वाइड मिनिमम वेज फॉर फार्म लेबर. नाउ यू हैव टू टेल मी कि मैंने पहले ही बता दिया कि यूएस का भी आया था, एंड ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स ओनली 1 and 2 both are true. ओके, यहाँ पे गलत दिया है, ये डी है आंसर. बोथ 1 and 2 are correct, but third is not true. तो अभी तक हमने देखा है कि हिस्ट्री क्या है, कि मिनिमम वेजेस किस कंट्री ने दिया है, नो इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स, लॉस एक्सेट्रा. नाउ कुछ तो उसका बेसिस होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड बाय सम कंट्रीज टू एडजस्ट मिनिमम वेजेस? ऐसा वो कौन सा देखते हैं, कौन सा वाला पार्ट देखते हैं, या फिर कौन सा इंडेक्स या कुछ जो भी है, या फिर इन्फ्लेशन, कुछ तो वो देखते होंगे ना, बेस्ड ऑन विच दे विल सेट दैट मिनिमम वेजेस. ओके, सो वो कौन सा है? So here in this case, when we talk about minimum wages are
based on the tying them to increased inflation or the cost of living. जो भी cost of living एक इंडेक्स आता है COL करके, ओके इंडिया का भी है, एंड बेस्ड ऑन दिस दैट इज द कंपेयर कि इस जगह का जो भी मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हो रहा है, मतलब रिलेटेड टू फूड आइटम्स, रेंट एंड कई सारे ऐसे आइटम्स निकाल के दे विल कंपेयर देम एंड अकॉर्डिंगली दे से ओके दिस इज द सिटी वेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई and this is a city where the cost of living is very low. So नवंबर 2024 के लिए ये इंडेक्स आता है on the range of 21 और something for India, and इंडिया में सबसे हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो दैट इज मुंबई, जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 25 प्लस पॉइंट्स, ओके ऑन एन एवरेज इंडिया के 21 क्लोज टू 21 ऐसा है, एंड कई सारे स्टेट्स का या कई सारे सिटीज का तो इससे भी बहुत कम है, एवरेज से भी कम है. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, वी हैव सीन दैट ओके मेनी कंट्रीज हैव कम अप विद देयर ओन वेजेस एक्ट्स, लॉस जो भी है, सो दैट दे कैन सपोर्ट द वर्कर्स, स्पेशली द वर्कर्स, सो दैट दे कैन अर्न एटलीस्ट थोड़ा सा एक मिनिमम वेज होना चाहिए उनका करके. तो इंडिया में भी 1948 में ये एक्ट आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट, ओके इसमें कई सारे सेक्शन से, क्लोज टू 16 सेक्शन से, हम हर सेक्शन का भी बहुत डिटेलली will be practicing or will be reviewing or will be revising the content in the form of MCQs only. So first question from that, consider the following statements regarding the objective of the Minimum Wages Act 1948. So उसका objective क्या है, major objective when it comes to the Minimum Wages Act 1948 of India. Now अगर इसमें देखा जाए तो the main or the main objective of this act is to provide minimum rates of wages in scheduled employments. Now scheduled employment क्या है, ये वो employment है जो एक schedule में specified है, और any process और branch of work forming part of such employment, जैसे कि कोई factory worker हो उनका काम, फिर उसमें कई सारे manufacturing units ऐसे कई सारे आते हैं, फार्मा है, ऐसे कई सारे एस्टेब्लिशमेंट्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो देते हैं ना, दैट कम्स अंडर द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड इन लेबर लॉज, कई सारे डेफिनेशंस दिया है उन्होंने इसमें, एंड एज पार्ट ऑफ विच there are few statements that I have given here. Now you have to tell me which of these statements is or are correct regarding the classification of individuals based on their age. Okay, first statement क्या है, an adolescent is an individual who has completed 14th year of age, मतलब 14 years complete कर लिया है उसने, so in simpler terms 15 years में आ गया है, but has not completed 18th year, 18 years अभी complete नहीं हुए. Okay, an adult is an individual who has completed 18 years of age irrespective of employment status. A child refers to an individual who has not completed 15 years of age and is prohibited from any form of employment. Yes. Now as per these statements, one, yes it is true, 14 years complete हो गया, मतलब 15 to 18 years को adolescent बोलते हैं as per the labor laws in India. And adult कौन है, जो who has completed 18 years of age, 18 plus जो भी है, those are adults. And a child is referred to an individual who has not completed 14 years of age. That's why हम लोग बोलते हैं ना 14 years, till 14 years. If we employ someone, a child, it would be called as a child labor only. So in this case, only statement 1 and 2 are correct. Okay, it's 1 and 2 which are correct in this, and I'm really sorry, here it is B. Okay. So friends, coming to the next question. So जब कुछ एक्ट आ रहा है, so obviously there would be some which governs them, और जो इसको
अप्लाई करता है, राइट? So in this case, under the same section, that is section 2 of the Minimum Wages Act 1948, the definition of appropriate government in labor laws, which of the following statements is or are correct? First one, the central government is the appropriate government for scheduled employments conducted by corporations established under a central act. So that वो सारे central establishments होंगे और central enterprises होंगे. The state government acts as the appropriate government for all the scheduled employments except those specifically assigned to the central government. Third, a major port and an oil field come under the purview of the state governments as the appropriate government. Now in 3 statements, you have to tell me which of the statements are true. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जनरली जैसे कि बड़े बड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स और एनी कॉर्पोरेशन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन सेंट्रल एक्ट, ऑल दीज फॉल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट. बाकी सब इन जो अभी मैंने एनलिस्ट किया है उनको छोड़ के बाकी जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे दैट वुड फॉल अंडर स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन दिस केस द स्टेट गवर्नमेंट वुड बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर implementing this Minimum Wages Act 1948. So in this case, the correct answer would be 1 and 2 only, because ports, oil fields ये सारे central government के अंडर आते हैं and not state government. Textiles, pharma ऐसा कुछ होते हैं तो that would fall under the state government. So अभी आता है next question, question number 8. The concept of competent authority, जैसे appropriate government एक है, उसके साथ साथ एक और authority है इसमें, इस law में, and that is competent authority is relevant in the context of scheduled employments. Okay, this is in context of the scheduled employments. Which of the following statements accurately describes the role of the competent authority in relation to scheduled employments? Okay. It is responsible for enforcing the provisions of Minimum Wages Act 1948 in scheduled employments. Enforcement किसका responsibility है? Appropriate government की. So वो रहेगा. B. So ये false है. It is empowered to adjudicate disputes arising from the payment of wages in scheduled employments. Payment of wages act already एक है जो हमने already अभी last 2 days में पढ़ा है, तो ये भी नहीं है. So ये भी false है. It is entrusted with the task of regularly determining the cost of living index for employees in specified scheduled employments. ये true है. And अभी हमने देखा था cost of living index is nothing but ये measure है relative cost of living over time और other regions. तो इससे क्या होता है, एक price of goods and services. Okay, हर जगह का देखते हैं and they compare that with each other कि इस जगह का कितना है, उस जगह का, अगर मुंबई and पुणे, okay, based on that cost of living किस तरह से है उस states में, okay, ये देखते हैं. तो as I've said, as on November 2024 इंडिया का as such cost of living index, average cost of living index है 21.2 और something, and सबसे highest है मुंबई which is approximately 25, and इससे कम भी है, जैसे लखनऊ का 18 ही है. ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एज पर नवंबर 2024. ये कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि कई बार रेट्स, फूड प्राइसेस ये सब चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंगली एवरी मंथ. ये दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. सो वो एस्टेब्लिश करना जो इंडेक्स है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. And D, it has authority to grant exemption from the provisions of Payment of Wages Act in respect of schedule. इसका कुछ भी नहीं है. So this C is the correct answer in this case. So coming to the next question, the definition same section 2 से ही अभी भी हम लोग questions कर रहे हैं. So the definition of employer under the Minimum Wages Act 1948 encompasses various entities responsible for the supervision and control of employees in scheduled employments. Now, which of the following individuals would be considered as an employer in respect of a scheduled employment carried out in a factory? Okay,
The owner of the factory who does not involve himself in the day-to-day supervision and control of the employees, ये होगा employer. या the manager of the factory is responsible for the supervision and control of the employees, ये होगा employer. The production supervisor who oversees the work of the team of employees but is not responsible for the overall supervision and control of employees. The human resource officer responsible for recruitment and training but not for the supervision and control of the employees. So whenever such case employer, उसमें क्या है, any person who employs one or more employees in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages are fixed, वो बोलते हैं एम्प्लॉयर. सो इन दिस केस फैक्ट्री में किसको बोलते हैं, मैनेजर. व्हाई, बिकॉज ही और शी इज द वन who is responsible for the supervision and control of employees. So उसमें इसको as an employer देखेंगे. Okay, and in any scheduled employment under the control of the government of India, जो भी head of the department है उसको हम लोग employer बोलेंगे. And अगर कोई in any scheduled employment अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, इन दैट केस जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा या फिर कोई भी अथॉरिटी होगा, अपॉइंटेड अथॉरिटी होगा, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द एम्प्लॉयर. एंड इन एनी अदर केस एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज, उनको एम्प्लॉयर बोलेंगे. सो इन दिस केस B is the correct answer because the manager is the one who is responsible for supervision and control of the employees. So here comes the next question. The definition of wages under the Minimum Wages Act 1948, it includes various monetary benefits payable to an employee. Okay. Now which of the following is included in the definition of the wages? See, when we talk about the wages, it encompasses all monetary remuneration expressible in currency. Okay, and that would be based on their employment contract, whatever that has been explicitly mentioned in that. Okay, based on that the wages would be paid, but yes, few are included and few are excluded. In this case only HRA is included in this, otherwise contributions paid by the employer to the pension fund, provident fund, gratuity payments, ये सब इसमें नहीं आता है. Okay, that is not included in the wages. और traveling allowance और LTC ये भी इसमें नहीं आता है. और कुछ special payments कुछ है based on that, some that is some special expenses entailed on the employee. So वो भी इसमें wages में consider नहीं किए जाते हैं. Okay. So coming to the next question, again from section 2 of the Minimum Wages Act. The definition of employee under the Minimum Wages Act 1948 encompasses various categories of workers. Now which of the following individuals would not be considered an employee under the Minimum Wages Act 1948? Now employee ये कौन है? ये वो individual है जिसको कुछ कंपेंसेशन दे के हम लोग हायर कर रहे हैं टू परफॉर्म वर्क, वेदर वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, क्लेरिकल हो, इन ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट विथ एस्टैब्लिश्ड मिनिमम वेज रेट्स. मतलब उस तरह की एस्टैब्लिशमेंट अगर काम कर रहे हैं वो उसको एम्प्लॉई बोलते हैं. एंड समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स आउट वर्कर्स हु आर गिवन मटेरियल्स और आर्टिकल्स बाय समवन एल्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस बट अगेन रिलेटेड टू द सेम बिजनेस. ओके, नाउ इन सबको हम लोग बोलेंगे कि एम्प्लॉई ही. and additionally an employee can be declared as such by the appropriate government in the respective field. जैसे कि oil field हो गया तो central government, यहाँ पे pharma या कुछ है, textiles या कुछ है तो state government, क्योंकि वहाँ पे appropriate government वो रहेगा. Okay, but in all this जहाँ पे यहाँ पे नीचे है, see a clerk working in a scheduled employment obviously he is an employee. A member, an outworker who receives materials from an employer for processing at home, even though he'll be considered as an employee of that company only, though that person is working from home and material भी वही provide कर रहे हैं. A supervisor working in a scheduled employment obviously he is also an employee, but a member of the armed forces of the union, he or she is not considered as an employee under this Minimum Wages Act. So coming to the next question,
Now section 3. Section 3 of the Minimum Wages Act 1948 empowers the appropriate government to fix and revise minimum rates of wages. Okay, appropriate government is actually responsible for the fixing of minimum wage rates for employees engaged in employments, especially the scheduled employments. Now, what is the maximum time interval within which the appropriate government is required to review and revise the minimum rates of wages? Okay, but there is also a catch here. And what is that? The appropriate government may not fix the minimum rates of wages in respect of any scheduled employment जहाँ पे पूरे स्टेट में मिला के भी लेस देन 1000 एम्प्लॉयज है एंगेज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में. इन सच केसेस appropriate government may not, okay, fix the minimum rates of wages, rather the enterprise itself would be responsible for that. Okay, otherwise in all other cases it would be the responsibility of the appropriate government to fix and revise the minimum wage rates from time to time. वो time period क्या है? वो time period है 5 years. Every 5 years they have to do that. Now when we look at the section 3 of the Minimum Wages Act 1948 जो actually बोलता है कि appropriate government is the one जो fix करता है minimum wage rate. So it provides for the fixation of minimum rates of the wages for different categories of employees. Now which of the following is not a valid criterion for fixing different minimum rates of wages under the Act? Now if we look at the appropriate government, it may fix a minimum rate of wages for the time work. A minimum time rate मतलब इतने टाइम के लिए इतना अमाउंट देना पड़ेगा एक तरफ, और दूसरा मिनिमम पीस रेट मतलब एक पीस के लिए बनाने के लिए फॉर एग्जांपल एक पीस बनाने के लिए उसके लिए इतना वेज देना है, वो एक तरह का है. एंड दूसरा एक गारंटीड टाइम रेट मतलब इतने टाइम में इतने पीस बनने चाहिए अकॉर्डिंगली इतना वेज मिलेगा, ठीक है. एंड दूसरा है ओवर टाइम रेट मतलब टाइम से ज्यादा जो ओवर टाइम करते हैं जैसे 8 आवर्स का फिक्स्ड आवर्स है उससे ज्यादा भी करेंगे तो उनको ओवर टाइम वेज मिलना चाहिए. इसके अलावा दे कैन फिक्स और रिवाइज मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज. किस तरह के कैटेगरीज? ईदर डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, अलग अलग डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ही कंपनी है लेकिन उसमें तरह तरह के लोग काम करते हैं मतलब तरह तरह के काम होते हैं तो अकॉर्डिंगली दे विल बी पेड, राइट. एंड एडल्ट्स के लिए कितना, एडोलेसेंट्स के लिए कितना मतलब अकॉर्डिंगली बिकॉज उनका मैन पावर जो पावर ह्यूमन पावर जो यूज करते हैं वो अलग अलग रहता है. स्पेशली ये आता है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे यूनिट्स में, सो वहाँ पे उस तरह से देते हैं अप्रेंटिस को कितना देना चाहिए. एंड चौथा है फोर्थ वन है डिफरेंट लोकेलिटीज मतलब या बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेसिस पे वो मिलता है. नाउ सो इसमें ये भी है based on this also it is done, based on different classes of work in the same scheduled employment also it's done, different localities also done, but the wages are not fixed based on the level of education or the qualifications. इसका criterion इसमें नहीं है. Now section 3 का ही अगेन एक और क्वेश्चन देखेंगे. सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट एम्पावर्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम वेज रेट्स फॉर डिफरेंट वेज पीरियड्स. सो हमने कई तरह के देखा है मतलब डिफरेंट बेस्ड ऑन द कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज के लिए और कितना करना चाहिए वो किस तरह से करेंगे बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड ऑल दैट. बट नाउ wage periods, time period. Now which of the following wage periods is not a valid option for fixing minimum wage rates under the act? Okay, ये होता है by the hour, by the day, by the month, okay, and by such other larger wage period. month से भी ज्यादा लेकिन वीक नहीं है, वीकली वाला इसमें पे आउट का कुछ भी नहीं है. Coming to the last question for today, section 4 of the Minimum Wages Act 1948 provides for composition of minimum rates of wages. Okay, इतना होना चाहिए करके minimum wage. What is a term used to describe the component of the minimum rate of wages
that is adjusted to accord with the variation in the cost of living index number applicable to the workers. Okay, इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को इसमें एडजस्ट करने की वजह से फाइनली दे विल अराइव एट द मिनिमम rate of wages, and that is none other than the cost of living allowance. क्योंकि बाकी जितना भी वो वेज रेट में डालेंगे, बट until and unless you will add this cost of living allowance because that keeps on changing, and this allowance will help. अगर उसको 10 रुपीज़ मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका स्टैंडर्ड है वहाँ का 15 रुपीज़, ओके, सो 5 रुपीज़ वहाँ ऐड करने की वजह से he'll be able, the person will be able to afford, वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको अफोर्ड कर सकता है. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इज द वन दैट इज एडेड और दैट इज रिक्वायर्ड टू अराइव एट द मिनिमम, वो एडजस्ट करने के लिए, सो दैट दे कैन लिव विद इन ए डिग्निफाइड मैनर. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्वेश्चंस देखा है, राइट. सो इसके साथ साथ अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो for the upcoming UPSC EPFO APFC and EO और AO for the year 2025, जिसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेब मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए. उसमें 3 तरह के कोर्सेस हमने लॉन्च किया है. एक तो है मास्टर कोर्स, जहाँ पे आपको, आई मीन इफ़ यू आर नॉविस, बट मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन एंड यू आर वरीड कि कहाँ से कंटेंट मिलेगा, कौन आपको गाइड करेगा, फॉर ऑल दैट वन पॉइंट और वन स्टॉप सॉल्यूशन वुड बी द मास्टर कोर्स. ओके, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, इवन गाइडेड सेशंस. एवरी वीक थर्सडे कुलदीप सर आपके लिए गाइडेड सेशंस भी लेंगे, सो एज टू गाइड यू हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन और टेक योर प्रिपरेशन. ये पूरा वो उसमें आपको समझाएंगे. सो यू विल गेट एवरीथिंग in the master course. Especially this is for those who have just started their preparation. नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज प्लस. ये उन लोगों के लिए है जो कुछ स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल या कुछ टॉपिक्स स्पेशली. सो प्लस उसमें टेस्ट सीरीज भी उनको मिल जाता है, सो दैट अकॉर्डिंगली दे विल गेट दैट एक्स्ट्रा, दैट कंटेंट जो भी वो ढूंढ रहे हैं, जो स्पेशल कंटेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस भी उनका हो जाएगा. ये उनके लिए जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं, दे आर लुकिंग आउट फॉर सम स्पेसिफिक कंटेंट, स्पेशली स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कोर्स टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए जो ऑलरेडी उनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया है, दे हैव ऑलरेडी गिवन good amount of time to the preparation. Now they are worried about where they stand, how to know and practice. For all that, this course would be, all those people, this would be very helpful, क्योंकि इसमें सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे इन द सेम, जो एग्जाम का फील होता है उसी तरह से, उसी मॉडल में आपको दिया जाएगा, so that you can practice a lot. So thank you very much friends. So see you all in the next part of the same. Hope you have enjoyed the session. All the best. Thank you.